Leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again hit out at the BJP and the Election Commission over the voter theft charge, the vote chori allegations. This during the last day of campaigning in Bihar. While addressing a rally, Rahul Gandhi called out the Election Commission for deliberately working in tandem with the BJP to deceive the public and steal their votes, as well as ensure that they come back to power. This prompted a sharp response from the Home Minister Amit Shah, who defended the SIR exercise, calling it a bid to clean the voter list and saying that Rahul Gandhi was trying to protect infiltrators as they were the ones who voted for the Congress. भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। कह रहे वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है। तो राहुल जी किसके वोट की बात कर रहे हैं? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ए राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। मुझे लगता है उनको किसी मानसिक चिकित्सक से दिखाने की जरूरत है। और वोट चोर तो बुद्धि नहीं है। अगर देश वो अपने पागल हों, दुनिया को क्यों पागल समझते हैं? महाराष्ट्र में अगर वोट चोरी हुआ तो क्यों नहीं कोर्ट गए? हरियाणा में हुआ तो क्यों नहीं गए? और 2 महीना सड़क पर आनंद ले रहे थे बिहार में, तो क्यों नहीं साक्ष्य दिया इलेक्शन कमीशन को? तो मैं समझता हूं वो दिमागी दिवालियापन हो गया। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तेजस्वी यादव भी अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। आरोप ऐसे लगाएंगे जिस आरोप में कोई दम ही नहीं है। वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है बिहार का, देश का मुद्दा नहीं है। जिस चीज़ का स्वागत होना चाहिए उसका विरोध करने का ये पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी कृत्य है। ये परेशानी इस बात को लेकर के है, ये घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, उनका बचाव करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से दैट इज व्हाई SIR इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। Intensive revision of voter list periodically has to happen, and Election Commission gives the opportunity for citizens of India to enumerate their vote even literally 2 months before an election. As a Telugudesam party, we have a very well-oiled system where our booth level worker knows how many votes are in his booth. If any changes have happened, he is given all the information so he can evaluate. In case any deletions happened by mistake, he will ensure that enumeration is completed. This is a well-oiled, well-laid-out process that every political party in India follows. It is very unfortunate that Rahul ji has realized the importance of voter list today. And today, curtains fell on the hectic and super energetic campaign trail for the Bihar elections. No more rallies, no more road shows. A total of 122 constituencies will go to the polls on the 11th of November. That's a day after. Now, on the ultimate day as well, both camps, that's the NDA and Mahagathbandhan, had deployed their top guns, starting from Union Home Minister Amit Shah in the NDA camp to Rahul Gandhi and Tejaswi Yadav from the opposition Mahagathbandhan. And a fierce war of words was seen
seen between the top leaders during a rally. Union Home Minister Amit Shah once again reiterated his infiltrator charge and issue. He said that Rahul and Tejashwi are shielding infiltrators in the state and took out a yatra to protect them. While Rahul Gandhi continues to attack the NDA with his vote chori claim, he appealed to the youth of Bihar to stay alert and stop this vote theft. All's well that ends well. मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की आज समाप्ति हुई है, मुझे लगता है हर किसी ने अपनी क्षमता के आधार पर पूरी मेहनत, पूरा प्रयास किया अपनी बातों को जनता तक लेकर जाने का। आज जब प्रचार समाप्त हो गया, ऐसे में मेरा जो अनुभव रहा 150 के आसपास जो सभाएं हुई हैं, मैं ये मानता हूं कि हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। 2010 का स्ट्राइक रेट जो एनडीए का अभी तक रहा, मैं ये मानता हूं कि हम लोग उसको भी इस बार पार करेंगे। आचार संहिता में बिल्कुल संयम के साथ एक ही अपील, लोकतंत्र का उत्सव मनाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसीलिए सभी नागरिकों से निवेदन, प्रथम चरण में आपने इतिहास रचा, दूसरे चरण में भी भारी संख्या में आए और अपना अधिकार, अपना कर्तव्य निभाएं। चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, राजकर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, रसोईया हो, सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। सबका साथ जो है मिल रहा है। 3 दिन हो गया और अब तक आपने वोट की प्रतिशत नहीं बताई है। पहले तो उसी दिन पता चल जाता था, शाम में ही पता चल जाता था। अब 3 दिन हो गया, 3 दिन बाद भी लोगों को नहीं पता कि कितना महिला, कितना पुरुष जो है मतदान किया। अरे भाई, ये छुपाया क्यों जा रहा है? तो चुनाव आयोग को जो है जवाब देना। And more controversy in Bihar. An assistant returning officer was suspended in a case registered against him after a large number of VVPAT slips were found on the roadside in Bihar's Samastipur district. The VVPAT slips were found scattered on a roadside near a college. Now, the statement issued by the Chief Electoral Officer's office said that the district magistrate has been directed to visit the spot. Tejashwi Yadav hit out at the Election Commission, accusing them of vote theft and acting on the behest of the ruling NDA, demanding answers and asking on whose orders were these slips disposed. Meanwhile, the Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary dismissed these allegations, saying the RJD were making this up out of fear of losing the elections. सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जांच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई। देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन, पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है, और जो कौन होते हैं वो जो ड्यूटी पे, आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दाल पूरी की पूरी काली है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष, इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं वो दबाव में आके, सत्ता में जो बैठे हैं लोग, सिर्फ नेतृत्व के दबाव में आकर के काम कर रही है। कल आपने
मेरे दल की ओर से मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय चुनाव आयोग को। आप सब ने मीडिया में वो चिट्ठी देखी होगी। वो चिट्ठी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। पहले इलेक्टोरल प्रोसेस की शुद्धता के बारे में, स्ट्रांग रूम में किस तरह का प्रोटोकॉल पालन किया जाए, ऑल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाए, इसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो चुनाव आयोग को फौरन हस्तक्षेप करके शुचिता बहाल करना होगा। देखिए, उस तरह का कोई भी मामला होगा तुरंत एक्शन होगा। और सरकार का भी स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन का भी स्पष्ट। लालू यादव जी के लंका में आग लग चुका है, इसलिए महागठबंधन के लोग इसी तरह आप देख रहे होंगे बिहार में जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उनको पिटवाने का काम लालू जी के गुंडे कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, वैसे सभी लोगों पे कार्रवाई होगा। Welcome back. The BJP has hit out over the Karnataka jail video controversy after videos were released and showed that inmates were enjoying themselves in jail, including an alleged ISIS recruiter. The BJP says terrorists getting privileges under the Congress government. The BJP said the Congress vote bank mindset has been exposed. This is just one of the many videos that have emerged from the Bengaluru jail, which show inmates enjoying themselves and enjoying certain privileges. Well, let's go across to Ritu now for more on this story. And Ritu, now the BJP picking up this particular, issue about the alleged ISIS recruiter and how he's enjoying privileges in jail. Well, very true. You see, the BJP is right now up in the arms regarding the series of videos that have in fact surfaced from the Bengaluru Central Jail, where these convicted are supposed to undergo the punishment while they are seen having this luxurious life, probably the VIP treatment that one really can see. That's the reason you have the BJP stating that it is the same, basically the kind of what really has been said by the BJP is that the terrorists are getting this kind of privileges under Rahul Gandhi's Congress government. Now, that's the sharp reaction that's coming in from the BJP side. But all that you see, we've been seeing that this has really mounted a pressure on the state government now, that the Home Minister has called for a high-level meeting where that the Karnataka CM Siddaramaiah has also directed him to immediately take this up there, that he does not want to entertain any sort of lapses that are really taking place, and henceforth these incidents should really not come to the fore, is what has been said by the Chief Minister. But now needs to be seen what would really pan out in the high-level meeting that the Home Minister is going to chair tomorrow, probably that way. All that needs to be seen, what the more decisions that the government would come up with in the meeting. All right, Ritu, thanks so much for joining us with those details. So after NDTV reported on these videos that have emerged from Bengaluru jail, we saw impact with the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Karnataka Home Minister G. Parmeshwar assuring action will be taken. There you can see those videos. According to the Karnataka Chief Minister, the DG of jails was on holiday. He said that such an incident should never happen again, while G. Parmeshwar said that he will not tolerate this and that existing staff should do proper work instead of excuses. This comes after major security lapse and preferential treatment at Bengaluru jail were caught on camera, where notorious inmates, including the ISIS recruiter as well as a serial rapist and killer, could be seen on mobile phones, some inmates even having a party. ನಾಳೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ರಜಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೆಳಗಿನ ಲೆವೆಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಾಫ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ.
ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Hello, ma'am. I wanted to, speak to you about, the ongoing issue as far as Parapanagara Bengaluru Central Prison is concerned. There have been a series of videos that have emerged showing ISIS operatives, serial rapists, and gold smuggling accused and others getting mobile phones, television sets, being able to cook in the barracks. You, of course, have a wealth of experience in dealing with, prisoners and how to deal with things inside prison. What do you make, firstly, of such things repeatedly happening at the Bengaluru prison? No, I think if it is on camera, then where is the need for inquiry? These are open and shut. All thing is we need to now fix accountability. If the camera evidence exists, then you inquire on fixing. But the question is, it's not done. Any corruption in prison is not in isolation. It is in cohort. It is in collision. It's in collaboration. So therefore, I think they are hoodwinking again. Yeah. What do you think can be done in cases like this to put an end to such practices inside prison? Well, straight away, such people need to go. They need to lose their jobs. They need to be retired. They need to be dealt with. You cannot just continue with the same superintendent if this has all been found out. The answer lies in that of removal of these people and not just transfer to another prison, but then brought out of the system, not given prison duty and asked to explain. And what is his explanation? How can he say he does not know? He did not know because he is an insider. He is as much an insider. He is actually a prisoner of his own duty. And the only time when he is not a prisoner of his duty is when he leaves the prison. For the answer is his removal. And number two, once the removal, then asked to explain. And obviously the explanation cannot. This can happen. So I think that he needs to be immediately removed and replaced by somebody else, because now the cameras are speaking. So what can he say he did not know? Then what is the insight for? Because if you see the office of the superintendent is always inside the prison. It's not outside the prison. Yeah. It's inside. And staying with news from Karnataka, the Chief Minister Nataka there in the state has become nothing but a meme fest for the BJP. Karnataka BJP dropped yet another spoof video mocking the state Congress over the endless chair Nataka or the infighting over the Chief Minister's chair. After dropping Karnataka Congress's musical chair AI video, the BJP has posted this new video showing no Chief Minister chair November for Deputy Chief Minister DK Shiv Kumar. It was only last week when the BJP posted an AI-generated video showing top 4 Congress leaders of the state in a game of musical chairs for the top job. Now, a big row over the RSS anthem in Kerala after students sang the RSS anthem in a Vande Bharat train launch which took place, which was shared by the railways. Now, this led to outrage and a strong reaction from Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, and the Kerala Education Minister has ordered a probe into the matter and stated that secular education is mandatory for students. Also, using students is against the Constitution. While the Chief Minister lashed out at the railways officials, accusing them of having Sanghi mindset, and that by sharing the video, the railway authorities have exposed how eminent national institutions are being subverted by the Sangh Parivar politics. That is very, very objectionable, and I express my protest because the inaugural function of the Vande Bharat train, the RSS song singing is really, it is RSS is infiltrating in all fields. This Ganagita singing is very objectionable. I am condemning. This should not repeat. We will take it very seriously. This kind of subsidizing all the functions. Fortunate things have done yesterday, because in a traveling train, passengers are from all communities. But yesterday, after the inauguration,
some students forced to pray their RSS song. This is absolutely wrong. Government is always trying for a sovereign idea in all fields. So it is condemnable. It will not be repeated in future. Prime Minister should reply for these activities. Hypocrisy of left is pro-max. On the one hand, they have problem with Bharat Mata. They oppose Bharat Mata on any kind of stage. Then they have a problem with RSS. They have a problem with Vande Mataram. Their intolerant mindset has a problem with slogans that are in favor of Ma Bharati. But they don't have problem with PFI. They don't have problem with Tukde Tukde Nara. They don't have problem with those who are chanting and eulogizing Hamas. They don't have problem with those forces which want breaking up of India. This is the double standards of left. With that, we'll slip into a short break. Thanks for watching. Goodbye.